प्रथम अध्याय मधुकैटबवध। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम शावीर्णौ सूर्यतनयो जमनुः कत्ततिष्ठम निशामयो त्वदुत्पत्तिं विस्तराद् मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभागो सावर्णिस्तनयो रवे सारोचिसे हन्त्यारे पूर्वं चैत्रवंशो समुद्भव शूरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्योपालयत सम्यक् प्रजाः पुत्राणि बहुरशानो बभूवु शत्रो बभूपा कुलाविध्वंसिनस्तथा तस्योतैरवो बद्धयुद्धमति प्रबलदण्डिनः नुन्नैरोऽपि सतैर्युद्धे कुलाविध्वंसिविर्जितो ततो सपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तो स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैबलिविदुष्टदुर्बलस्य दुरात्तभिः कोशबलं चापहृतं तत्रापि सपुरे ततो मृगया व्यजेन ऋतसम्मोषा भूपति एकाकी हय मारुहो जगाम गहनं वनं स तत्राश्रमो दाक्षिदुर्दिवर्जस्य मेधसो प्रशान्तो शापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् स कालञ्चो मुनिना तेन सत्कृत ईतस्तेजश्चो विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोह चिन्तया तदा तत्र ममोत्कृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैस्तैरसद्वृत्तै धर्मतो पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरोऽस्ति सदा मदो ममो वैरिवशं यातो कानभगनुप्लसते जे ममानुगता नित्यं प्रसादधनभजन्यै अनुवृत्तिं ध्रुवं ते हद्दो कुर्वन्त न महीवृताम् असम्मगवयशिलस्तै कुबुद्धि सततं वयं सञ्चितो सोहति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतो चान्यच्चो सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्रो विप्रसमाव्यास वैश्यमेकं ददर्श सपृष्टस्तेन कस्त्वं वो हेतुश्चागमनेत्रकः शशोको इव कस्मात्यं दुर्मना इव लक्षसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच स त्वं वैश्यो प्रश्रयो प्रणतो नृपं वैश्योवाच समार्धीनं वैशहोमुत्पन्यो धनिनां कूले पुत्रोदारै निरस्तश्च धनलोभादो साधुभिः विहीनश्च धनदारै पुत्ररादायो मे धनं वनमो भाग्यतो दुःखी निरस्तचाप बन्धुभिः सोऽहं न वेदिनी पुत्राणां कुशलातिकं प्रवृत्तिं सजनानां च दरनक्षत्रो संस्थितो किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेम किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्त्या दुर्वृत्त्या किन्नु मे सुता राजोवाचो जै निरस्तो भवालुब्धै पुत्रदारा दिविर्धनै तेषु किं भवतो स्नेहमनुबन्ध्याति मानसं वैश्योवाच एवमेतदो यथा प्राहो भवानस्मद्गतं वचो किं करोमि न बन्धाति ममो निष्ठुरतं मनो जयी सन्त्रज्यो पितृस्नेहं धनोलुब्धै निराकृतो पतिसजनहार्दञ्च हार्दितेष्वेवो मे मनः किमेतन्याविजानामि जनन्योऽपि महामते यत् प्रेम प्रबलं चित्यं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासदोष्मसञ्चो जायते करोमि किं यन्यो मनस्तेव प्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्थौ सहित्यौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधीनं वैश्यहस्यौ स्वच पार्थिवो सत्यमो कृत्या तु तौ यथा न्यायं यतर्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काशीचक्रतु वैश्यपार्थिवो राजोवाचो भगवंस्तामहं पृष्टुमिच्छामेकं वदस्यौ तत् दुःखाय जन्मे मनुष्य सचित्तं विना ममत्यं मम राजस्यो राज्यं वकिलेष्वपि
जनतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्नुनि सत्यमो अयञ्च निकृतपुत्रैदारैः विस्थोततो जितो सजनेनो च सन्त्रक्कते सुहार्दी तथा पति एवमेष तथा हञ्च दावपत्यन्त दुःखितौ दृष्टो दोषेऽपि विषये ममोत्कृष्ट मानसौ तत् केन्नैतन्या भागो जन्यो ज्ञानिनो रोपि ममास्य च भवते स्वाहु विवेकानन्दस्य मूरता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्त्यसो जन्त विषयो गोचरे विषयश्चो महाभागो याति चैवं पृथक् पृथक् दिबन्धा प्राणिनो केचिदत्रा बन्धास्तथा परे केचिदिव्या तथा रात्रौ प्राणिनो स्थूलदृष्टयो ज्ञानिनो मनुष्याः सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनो सर्वे पशुपक्षिमृगादयो ज्ञानञ्चोतन्यनुष्ठानं यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणाञ्चो यत्तेषां तुल्यमनस्ततो वयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतानपतगञ्चावञ्चसु कनोमुखादृतानो मोहात् पीड्यमानोऽपि क्षुधा मनुष्य मनुजो व्यघ्रो साविलासाशुतनो प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नम्यते किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिण्यो तन्यात्र विस्मयो कार्यो योग निद्रा जगतपते महामाया हरेश्चैतता सम्यहते यगत् ज्ञानिनामोऽपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलदा कृष्य महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतो चराचरं सैषा प्रसन्या वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुर्भूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैवो सर्वस्वरेश्वरी राजोवाचो भगवन् काहि सा देवी महामायेति yang भवानो ब्रवीति कथमुत्पन्निया सा कस्मसश्चोकिन्दिजो यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यजुद्भवा तत्सर्वं श्रुतमिच्छामि तत्यो ब्रह्मविदं वरो ऋषिरुवाच नीतैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा स्त्यतं मम देवानां कार्यसिद्धार्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगते कारणविकृते आस्तिर्जोषेशमवजत् कप्पान्ते भगवान् प्रभु तदा दावो शूरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णो मलद्भुतौ हन्तं ब्रह्मानमुद्धतौ स्वनाभिकमले विष्णुस्थित ब्रह्मा प्रजापति दृष्टा तावो शूरौ चग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्ट्यावो योगनिद्रां तमेकाग्रोदयो स्थितो विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रोकितालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारहारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसो प्रभु ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वाधा तं हि वसटकार सरात्तिका सुधा तमक्षरे नित्येतिदमात्रान्तिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुचार्या विशेषतो तमेव सा त्वं स्वावित्री त्वं देवी जननी परा तयैव धार्यते सर्वं तयैतत्सृज्यते जगत् तयैतत्पल्यते देवी तमत सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा तं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतः स जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुति महामोहा च भवति महादेवी महाशुरी प्रकृतिस्थो च हि सर्वस्य गुणत्रयो विभाविनी कालरात्रि महारात्रि महोरात्रिश्च दारुणा त्वं स्थितमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिवर्धो लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति कान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गोदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभूषण्डी परिघायुधा
सौम्या सौमे तो राशेशो सौमे भस्तती सुंदरी परा परानं परमा तमेव परमेश्वरी गच्छो किंचित कच्चिद वस्तु सद सद बकिलात्तिके तस्यो सर्वस्यो या शक्ति स्वात्वं किंस्यसे तदा जया तया जगत सृष्टा जगत पातति यो यगत सोपि निद्रावसं नीतो कस्त्यां स्तोतु महेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण मोहमीशानो एव च करितास्ते जत हस्त्यां क्व स्तोतुं शक्तिमान भवेत् स्वातमित्वं प्रभावै स्वयि रुद्रारै देवी संस्तुता मोहित्योद्राधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत स्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधश्चोक्रियतामस्य हन्तमेतौ महाशुरौ ऋषिरुवाचो एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रवर्धनार्थाय नियन्तं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदये भस्तथोरस निर्गमो दर्शने तस्थौ ब्रह्मणः भक्तजन्मनो उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तजनार्दनो एकार्णव्यायीशयनात्ततो सदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्तानावति वीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते खनावत्तुं ब्रह्मणं जनितद्दमौ समुत्थाय ततस्तव्यां जुजुधे भगवान् हरि पंचवर्षो सहस्राणि बाहुप्रहरो न विभु तावती बलमत्यौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तो ब्रियतामिति केशवं भगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम बद्धा बुवावोऽपि किमन्येन वरनात्रो एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिता वैमिति तदा सर्वमापमयं जगत् विलोकोतव्यांगदितो भगवान् कमलेक्षणो प्रीतौ स्वस्तवो युद्धेन श्लाघस्त्वं मृत्युरावयो आवञ्जयिन जत्रर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेतुक्ता भगवता शङ्खचक्रो गदावृता कृत्या चक्रेण वैशिन्ये जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्या ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्यादेवास्तु भूय शृणु वदामि ते इति श्रीमार्कण्डेयो पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभोऽध्याय। मध्यम चरित्र द्वितीय अध्याय महिषासुर सैन्यवध। ओम नमश्चंडिकाय ऋषिरुवाच देवासुरमबुधयुद्धं पूर्णमब्धो शतं पुरा महिषेसुरा नामोद्धीपे देवानाञ्चो पुरन्दरे तत्रासुरैः महावीर्ये देवसैन्यं पराजितं जित्या च सकलानो देवानिन्द्रो भुन्न महिषासुरः ततो पराजिता देवा पद्मजनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्रो गतास्तत्रो जत्रेश गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्दन्यो महिषासुरचेष्टितं द्विदशा कथयामाशु देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्ये सञ्चादिकारणो स्वयमेवादितिष्ठति सर्गा निराकृता सर्वे तेनो देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेनो दुरात्तना एतदो कथितं सर्वममरारि विचेष्टितं शरणञ्चो प्रपन्या स्नोबदस्तस्य विचिन्तताम् इत्थं निशम्य देवानां वचंसि मधुसूदनः चकारो कोपं सम्मुच्य भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततो होति कोपपूर्णस्य चक्रीन वदनात् ततो निश्चक्रां महत्तेज ब्रह्मणो शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सकरादीनां शरीरतो निर्गतं सुमहत्तेजश्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसो कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र जलाव्याप्तो दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तत भुन्यारि व्याप्तलोकत्रयं दिशा
जदवुच्चम्भं तेजस्तेना जायतो तम्युखं यम्मेन चाबभन् केशबाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयुग्नं मद्दं चैन्द्रेण चाबवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवो ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्लोहकतेजसा वसुनाञ्चोकरङ्गुल्य कौवेरेण च नासिका तथास्तु दन्त्या सम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नयनोत्रित्रयं यज्ञे तथा पावको तेजसा भ्रुवौ च सन्देहस्तेजो श्रवणावनिलस्य च अन्येषाञ्चैवो देवानां सम्भवस्तेजसं शिवा ततो समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवं त्वं विलोकमुदं प्रापुरमोरा महिषार्दिता शूलं शूलाद विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृको चक्रञ्च दत्तवान कृष्ण समुत्पाद्य सचक्रतो शङ्खञ्च वरुणं शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनो मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेजुधि वज्रमिन्द्रो समुत्पाद्य कुलिसादमराधिप ददौ तस्यै सहस्राक्ष घण्टामयिरावदत् गजात् कालदण्डाद जमदण्डं पाशञ्चाभूपति दद्दौ प्रजापतिश्चक्रमालं ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तो रोमकूपेषु निजरश्मीन दिवाकरो कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वदो गोय्व्यो कमनोत्तममो अङ्गुरीयकरत्नानि समस्तशाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चाति निर्मलम् अस्त्राननेकरूपाणि तथा भेदं चोदंशनम् अम्लान पङ्कजाङ्गमालां क्षीरशूरसीच्चापरम् अदद्दज्जालधिस्तस्यै पञ्चजञ्चाति शोभनं हिमबाणवहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूरया पानपत्रं धनाधिप शेषश्चोद सर्वनागेश महामोनि विभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्तय्यः पृथिवीमिमम् अन्नैरोपि सुरै देवी भूषणैरायुधैस्तथा सन्मानिताननादच्चै षट्हासं मुहुर्मुहुः तस्यानदेन घोरेण कितस्मा पुरितं नमः अमायतहोति महता प्रतिशब्दमानुभूत चक्षुभूषकला लोकाः समुद्रश्च चकस्फिरे चचाल वसुधा चेलु सकलश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुपूर्णयोश्चैनां भक्तिनरमार्थमूर्तयो दृष्टा समस्त्यं संक्षुद्यं त्रैलोक्यममरारयो सन्नदाखिलसैन्यस्ते समुत्तस्तूरदायुधा किमेतोदीति क्वधाधवश्यो महिषासुरः अभ्युद्धावतो तं शब्दमोसै स्वैरो सूरैर्वृतः सददर्श ततद्देवीं व्याप्तलोकत्रयं दिशा पदाक्रन्तनतो भुवं किरीटोल्लिखिताम्बरं कविताशेषपातलं धनुर्या निश्चनेन तं दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्यो संस्थिताम् ततो प्रववृत्ते युध्यं तया देव्यासुरोदीशां शस्त्रास्त्रै बहुधा मुक्तैरादीपितो दिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चक्षुरक्षो महासुरः जुजुदे चामुरश्चन्नैश्चतुरङ्गो बलान्वितो रथानामजूतै शरोभिरुग्राक्षो महासुरो अजुधातु जनञ्च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशब्दिश्च निर्जूतैरशीलमा महासुरः अजूतानां शतैशरविभास्कलो जुजुधे रणे गजबाजि सहस्रौ घैरनेकै परिवारितः वृतो रथान्यां कट्या युद्धे तस्मिन् युद्धत विरालक्कहजुतानां च पञ्चाशब्दि रथाजुतै जुजुदे संयुगे तत्र रथानां परिवारितो अन्ये च तत्राजूतशो रथो नागो हयैवृता जुजुदे संयुगे देव्या सह तत्रो महासुरा
कोटि कोटि सहस्त्रैत्र रथानां दन्तिनां तथा हयानञ्चोवृतो युद्धे तत्राभुन्न महिषासुरो तमोरैभिन्दिपालैश्च शक्तिभिमुसलैस्तथा जुजुदुसंजुगे देव्या करैगपरशुपट्टिशै केचिच्च चिक्षिपुः शक्ति केचित् पशांस्तथां परे देवीं खड्गो प्रहारैस्तो ते तां हन्तं पचक्रमु शापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलायैव प्रचिच्छेदो निज शस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्तनरा देवी स्तूयमानाशुरर्षिभिः मुमोचासुरो देहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धधूतशट देव्या वाहन केसरी चचारासुरसैन्येषु वने शिव हुताशनो निःश्वासमुचे जांश्च युद्धमानारण्यम्बिका तत् सद्यो सम्भूता गणा शतसहस्रशो जुजुदुस्ते परशुभिन्दिपालाशिपिट्टिशै नाशयन्तो सुरगणानो देवी शक्तोपबृंहृता अबादयन्तो पटहानो गणाः शङ्कास्तथा परे मृदङ्गाश्चो तथैवान्ये तस्मिन् युद्धो मौतसवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतश निजघानो महाशुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्ट्यास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन वध्याचन्यान् कर्यो यतो केचिदिदाकीतास्तिक्नै खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पात्तेन गदया भूविशेरते बेमुश्च केचिदुदीरं मूषलेन वृषंहता केचिन्निपातिता भूमौ भिन्याः शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौघेन क्रीता केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्रणानममुच्चस्त्रिदर्शार्दना केषाञ्चिद् बाहवश्छिन्याश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि प्रेतुनश्यामन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नो जङ्घास्तपरे प्रेतुरुभ्यां महाशुरा एकबहखीचरणा केचिद्देव्यादिधा कृता छिन्नेहोऽपि चन्ने शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धा जुजुर्देव्या गृहीतो परमायुधा नर्नितुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्योलयाश्रिता कबन्ध्याश्चिन्न शिरसो खड्गो शक्त्रष्टिप्राणयो तिष्ठो तिष्ठेति भासन्त्यो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथा नागैरो शूरैश्च वसुन्धरा अगम्य सौव तत्र यत्राभूत स महारणो शोणितौ वा महानद्यो सद्यस्तत्रो विस्तृश्रुवो मध्ये चासुरसैन्यस्य वारोनासुरो वायिनां खनेन तन्यो हासैनमसुराणां तथाम्बिकां निन्ये खयं यथा वह्निस्तन दारुमाचयं स्वच सिंहो महानदमुत्सिजेन धूतकेशर शरीरे भोमरानिमुसुनीव विचिन्नति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृत्यं युध्यं तथा सुरै यथैश्वां तुतुर्यदेव्याः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डेयो पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधोऽध्याय। तृतीयोऽध्याय महिषासुरवध। ऋषिरुवाच निहन्नो मानं तत्सैन्यमबलको महासुरो सेनानिश्चक्षुरो कोपदो जजौ युद्धो मताम्बिकां स देवीं सर्वर्षेणो ववर्षो समरे हसुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं त्वयवर्षेण तोयदो तस्योच्छित्या ततो देवी लीलयैवो शरत्करान् जघान तुरो गान बाणैजन्तराञ्चैव बाजिनं चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजञ्छाति समुच्छ्रितं विव्याद चैवो गात्रेषु छिन्नधनामाशु वै स्वच्छिन्नधनाभिरथो हताश्व हतसारथि अबोधावतो त्वां देवीं खड्गचर्मोदरो शूरो सिंहमाहत्यो खरे गण
तीक्ष्ण धारेण मूर्धनि आजो घानो भुजे सभ्ये देवी मपति वेगो बानो तस्या खरेगा भुजं प्राप्यो प्रफाल नृपनंदन ततो जग्राहो शूलं शोकपादारुणोल्लोचनो चिक्केपोच ततस्तत्रु भद्र कल्यां महाशुरो जाजल्यो मानं तेजोभि रविबिम्बोमि बम्बिरात् दृष्टा तदा पतच्छूलं देवी सुलभमुञ्चुतो तच्छूलं सतदात्तेन नीतं स्वाच महाशुरो हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्सो चमूपतो आजो गामो गजारूरो श्यामर स्त्रीदर्शार्दन सोऽपि शक्तिं मुमोचातो देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्कारविहतं भूमौ पातयामास निष्प्रभं भग्नां शक्तिं निपातितां दृष्टा क्रोधो समन्वितो चिक्षेप चामरो शूलं बाणैस्तदोऽपि सच्चिनत् ततो सिंह समुत्पत्तो गजकुम्भान्तरस्थितो बाहुयुद्धेन जुजुदे तेन चैस्त्रिदशारीना युद्धमानौ ततस्थौ तु तस्मान्न गान्न हिङ्गतौ जुजुधाते होति संरब्धौ प्रहारैरोति दारुण्यै ततो वेगात् खमुत्पत्तो निपत्तो च मृगारीना करो प्रहारेण शिरश्चामरस्योऽपृथक्कृतम् उदग्रश्चोरणे देव्या शिलाभिक्षादिभिर्हतो दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितो देवी क्रुद्ध्या गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं भास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्त्रम्भां तथान्धकम् उग्रास समुग्रवीर्यं च तथैव च मोहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विरालशासिना कायात् पातयामास वैशिरा दुर्धरं दुर्मुखं च वौ शरैनिन्ये जमक्षयम् एवं संख्यो माने तु ससैने महिषासुरः महिषेन स्वरूपेण तासयामास तन्गणान् कांश्चित्तण्डुप्रहारेण हुरोक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलोत्तरितांश्चन्यान् शृङ्यावाञ्चोऽपि दारितान् वेगेन कांश्चित् परान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेन्यान् पातयामास भूतले निपत्तो प्रमथानि मब्बद्धावतो सह शूरः सिंहं हन्तं महादेव्या कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपस्महावीर्यो खूरखुन्नो महितलो शृङ्ग्याव्यां पर्वतानुञ्चांश्चिक्षेप च ननादोच्च वेगो भ्रमणो विक्षुण्या महितस्सो वसीर्यतो लाङ्गुलेन हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः भूतशृङ्गो विभिन्नाश्च खण्ड खण्डं जजुर्घना शशानिलास्त्या शतशो निपेतून वसः चला इति कदो समान्नमपन्त्यं महासूरं दृष्टा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदहोकरत् सा क्षिप्ता तस्यो वै पाशं त्वं बबन्धो महासूरं तत्याजो महिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततो सिंहो भवत् सद्यो जावतो शम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषो खड्गपाणिरो दृश्यतो ततो एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सयोक्कै त्वं खड्गचर्मणा सार्धं ततो शोभुन्नो महागजो करेण च महासिंहं तञ्च कर्षो जगर्ज च कर्जतस्थो करं देवी खरे गणो निरकृन्ततो ततो महासूरो भूयो महिषं वपुरास्थितो ततैव खोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततो क्रुद्ध्या जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणोल्लोचना ननर्दचाशुरः सोऽपि बलवीर्यमद्धतो विषाणव्यञ्चो चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तानो प्रहीतांस्तेन चूर्णयन्ती शरतकरै उवाच तं मदद्भूतमुखरागाकुलाक्षरं देवुवाच गर्ज गर्जो खनङ् मूरमोधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते हत्रैव गर्जिसन्त्यासु देवता ऋषिरुवाच एव मुक्ता समुत्पत्तो शारूरा त्वं महाशूरं
पदेनाक्रम्यो कण्ठे च शूलेनैनो मतारयत् ततो सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजो मुखात् ततो अर्धनिष्क्रान्त एवाति देव्या बीर्येण संवृतो अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युद्धमानौ महासुरो तया महसिना देव्या शिरच्छित्ता निपातितो ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशो तत् पोहरसञ्चोपरं जग्नु सकला देवतागणा तुष्टुपुस्तां सुरा देवी सहोदिवै महर्षिभिः जगु गन्धर्वपतयो नन्दितुश्चापरोगणा इति श्रीमार्कण्डेयो पुराणे सावर्णिके वनन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो तृतीयोऽध्याय। चतुर्थोऽध्याय शक्रादिकृतो देवी स्तुति। ऋषिरुवाच शक्रादयो शूरगणा नियते हतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्तनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टुवु प्रणति नम्र ऋषिरंसा बागोभिप्रहर्षो पुलकोदचामुरो देहा देव्या जया ततोमीदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूहो मूर्त्या तामम्बिकामखिलो देव महर्षि पूजां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानीशान्नः यस्या प्रभवमतुलं भगवानन्त्यो ब्रह्माहरश्चो नहि वक्त्रमूलं बलञ्च सा चण्डिकाखिल जगतो परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मोतिं करतु या श्री स्वयं सुकृतिनं भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्यनङ्कितो धियं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताङ्कुल जनप्रभवस्य लज्जा त्वां त्वां नता स्म परिपालयो देवी विश्वं किं वर्णायं तव रूपमचिन्तमेतत् किञ्चातिविर्जोमसुरक्षयकारी भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवातीयानि सर्वेषु देवोऽसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तो जगतां त्रिगुणापि दोषै न गयसे हरिहरादिविरोपप्यरा सर्वाशयाखिलोमीदं जगोदंशभूतमवाकृता हि परमा प्रकृतिस्तमद्या यस्या समस्तसूरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुचर्यसे तमतो एव जनैश्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त महाव्रता च अभ्योससे सुनियतेन्द्रित तत्तसारैः मोक्षार्थिभिः विमुनिभिः रस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दातिका सुविमलो जुग्साङ्निधानो मुद्गितरम्यो पदोपठवताञ्च संल्यां देवी त्वयि भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री मेधाहोसि देवी विदिताखिलशास्त्रोक्षरा दुर्गा होसि दुर्गो भवसागर नौरो संज्ञा श्रीकैटभारि हृदयैकितादिवासा गौरी तमेव शशिमौलीकृत प्रतिष्ठा ईशत समामलं परिपूर्ण चंद्रो बिंबानुकारी कनकोत्तमो कांति कांत्याम अत्यद्भुतं प्रहितमाप्तुरुषा तथापि वक्त्रं विलक्को सहसा महिषासुरेण दृष्टा तु देवी कुपितं भृगुटीकरालो मुद्दच्छो शङ्को सदृशच्छवीयन्न सद्य प्रणानन्मुचो महिजस्तदतीव चित्रं कैर्जीवतेः कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयोसि कोपवती कुलानि विज्ञातो मेतोदधूनैव यदस्तमेतनीत्वं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्यता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सिदति धर्मवर्गः धन्यास्तो एव निवृत्ता त्यजो वृत्तधारा
जे संसदा बुद्धयोदा भवती प्रसन्या धर्मानि देवी सकलानि सदैव कर्मान्न तद्रितः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रये होपि फलदाननु देवी तेन दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमशेष जन्त्य स्वस्त्वयि स्मिता मतीव शुभं ददासि दारिद्रो दुःख भय हारिणी कातदन्या सर्वपोकरणाय सद्राद्रचित्या ए विहतै जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तो नाम नरकाय चिरायो पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मन्येति नुनो महितानो विनिहंसि देवी दृष्टैव किन्नु भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरीषु यत् प्रहीनोऽसि शस्त्रं लोकानो प्रयान्तो रीपबहोभिः शस्त्रो पुता ई त्वं मतिर्भवति तेष्वपि ते होति स्वाधि खड्गो प्रभा निकर विस्फुरो नैस्तथोग्रै शूलाग्रकान्ति निवहेनो द्विषोः सुराणां यन्यागता विलयो मंसुमदिन्दुखण्ड्यो योग्याननं तव विलोकयतां तदेत्वत् दुर्वृत्तो वृत्तशमनं तवो देवी शीलं रूपं तथैदधि विचिन्तमतुलमन्यै विडिजञ्चोहन्त रीतो देवो पराक्रमणां वैरिशोऽपि प्रकटितैव दया त्वयेत्वं केनोपमा भवतु ते हस्यो पराक्रमस्य रूपञ्चो शक्रुभयो कार्जति हारिकुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्ट्या तज्जेव देवी वरदे भुवनत्रये होपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं तया समरमूर्धनि तेहोपि हत्या नीता दिवं रिपुगणाभयोपस्तो मस्माकुस्मुदो सुरारिभवं नमस्ते शूलेनो पाहिनो देवी पाहि खरे गौन चाम्बिके घंटिया स्वनेन न पाहि चापज्जनिश्चनेन च प्रचं रक्ष प्रतिचाञ्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणनत्तशूलस्य उत्तराशं तथेश्वरी सौमानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चतुर्थो घोराणि त्वयि रक्कमंस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चस्त्राणि त्र्यम्बिके करपल्लवो सङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वत ऋषिरुवाच एवं स्तुता सूरै दिव्यै कुसुमैनद्भदै अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्त्रैर्दीपिस्तधूपिता प्राहो प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देवुवाच बृहतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तः विवाञ्छितं दद्यामहोमोति प्रीत्या स्तवैरेभिः सुपूजिता देवाऊचु भगवत्या कथं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतो शक्रोऽस्माकं महिषासुरः यदि वापि वरोद्यस्त्यास्माकं महेश्वरी संस्मृता तं नो हिंसथा परमापदो यश्चोमर्त्या स्तवैरभिस्त्यांस्तस्वतो मलानने तस्यो वित्तधिविभोदैर्वरदारादि सम्प्रदं विद्वयोमुत्प्रसन्या त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवै जगतहर्ते तथत्यनो तथेतुक्ता भद्रकाली बभूवन्तो रीता नृपो इत्येतत् कथितं भूपो सम्भूताशा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगतन्द्रयो हितैषिणी पुनश्च गौरी देहा सा समुद्भूता जतः भवत् वधाय दुष्टो दैत्यानां तथा शुम्भो निशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छुनिष्यो मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते इति श्रीमार्कण्डेयो पुराणे सावर्णिके मनन्तरे देवी महात्म्ये सकलादितीर्थे स्तुतीनां चतुर्थोऽध्याय।
उत्तर चरित्र पंचम अध्याय देवीदूत संवाद। ओं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भो निशुभ्याम सुराव्यां शचीपते त्रैलोक्यं जग्गभागश्चोर्रीता मद्बलाश्रयात् तमेव सूर्यो तं तद्वदधिकारं तथेन्द्यवं कैवेरो मथ जामञ्चो चक्राते वरुणश्च च तमेव पवन्दिदञ्चो चक्रतु वह्निकर्मो च ततो देवा विनिर्धुत्या भ्रष्टराज्या पराजिता हिताधिकारस्त्रिदशस्तव्यां सर्वे निराकृता महाशूराव्यां तं देवीं संस्मरन्तो पराजितं तयास्माकं वरो दत्यो यथापत्सु स्मितोऽखिला भवो तं नशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदो इति कृत्यामतिं देव हिमवन्त्यं नगेश्वरं जग्नुस्तत्रो ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुः देव ऊचु ओं ऐं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमो नमो प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमो कल्याणै प्रणता वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भुभृतां लक्ष्मै सर्वण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै शारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौमातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्या विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। इन्द्रियारामधिष्ठात्री भूतानाञ्चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्मै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चीतिरूपेण याकितस्ममेतदो व्यापोस्थिता जगत् नमस्तस्मै 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 नमो नमः। स्तुता सूरै पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दीनेषु सेविता कर्तुषा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्रानो विहस्तोच्चापदो या सम्प्रोतं च ददत्तै तापित्तै रश्माभिरिसा च सूरै नमस्यते या च स्मिता तत्खनमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिभिनम्रो मूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्त्यानां देवानां तत्र पार्वती स्नातु मोभाजज्जौ त्वये जन्यवान् नृपनन्दन सब्रवीत्यान्सुरानो शुभ्रबुद्धिस्त्यत्र का शरीरो कोशतो सस्या समुद्भूत्राहविच्छिवा स्तोत्रं ममै त्वत् क्रियते शुम्भदैत्यो निराकृतै देवै समेतै समरे निशुम्भेन पराजितै शरीरो कोशदो जत्तशा पार्वता निश्रिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु ज्ञाते तस्यां विनिर्गतायन्तु कृष्णाभूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलोकिताश्रया ततोऽहम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्शो चण्डमुण्डस्य वृत्तौ शुम्भनिशुम्भयो तव्यां शुम्भाया चख्याता अतीव सुमनोहरा कपस्ते श्रीमहाराजो भासयन्ती हिमाचलं नैव तद्रीक क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां कपस्सौ देवी ज्ञोतं चासुरेश्वरो श्रीरत्नमोतिचारवङ्गी दोतयन्ती दिशोऽस्ति सा तु तिष्ठति दैतेन्द्रोत्तां भवान् दुष्टुर्महति यानि रत्नानि मनयो गजास्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्त्यानि सम्प्रतं वृन्ति ते गृहे ऐरावतो समानीतो गजो रत्नं पुरन्दरात् परिजातरुताश्चायं तथैव चैश्रवाहय विमानं हंसयुक्तो मे तिष्ठति ते अङ्गणे रत्नभूतो मिहानीतं यदासीद् वेदसोद्भूतं निधिरेशो महापद्मो समानीतो धनेश्वरात् किञ्ज क्लीनिं ददौ चाब्दिमाला पङ्कजां छत्रं ते वारुणङ्गेः काञ्चनो श्रावितिष्ठति तथायं सनन्दो वरो यः पुरासित प्रजापतेः मृत्युरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरिस्तया ऋता पाशो सलिलराजस्य भातुस्तवो परिग्रहे निशुम्भो शब्दजातश्च समस्त्या रत्नजातयोः वह्निरोपि ददौ तुग्नमग्नि शौचे च वाससि एवं दैतेन्द्र रत्नानि समस्त्यान्नरीतानि ते श्रीरत्नमेषकल्याणि तया कस्मान्न गृहते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचो शुम्भो स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुराम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्या वचन्यमां यथा च वेति संकृत्या तथा कार्यं तया लघु स तत्रो गत्या जतास्ते शैलदेशहति शोभने सा देवी तं ततो प्राहुश्लुकं मधुरया गिरा दूतो वाचो देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं पोषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः अव्याहत्याज्ञो सर्वासु यः सदा देवजनीषु
निर्जिताखिलो दैत्यारि सजदाहो स्नुष्यौ तत् ममो त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा जग्गो भागहनं सर्वानुप्लासमि पृथको पृथको त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्न शेषतो तथैव गजरत्नानि रीत्या देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथोनोद्भूमस्वरत्नं ममाम्बरै उच्चैस्रवोष संज्ञं त्वत्प्रणिपत्तो समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रोग्येषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मध्येव शोभने श्रीरत्नभूतं त्वं देवि लोके मन्यामहे वयं स्वास्तमोपानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वाममानुजं वापि निशुम्भो मुरविक्रमो भजो त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूताहसि वै यतो परमैश्वर्यो मतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतं व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरात् स्मिता यगौ दुर्गा भगवती भद्रा जयेदङ्धर्यते यगत् देवुवाच सत्यमुक्तं तया नत्रो मिथ्या किञ्चित् तयोदितं त्रैलोक्योऽधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशो किन्यत्रो यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रियतामप्लबुद्धिः त्वत् प्रतिज्ञा या किता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यापहोति यो मे प्रतिबलोकेश मे भर्त्या भविष्यति तदा गच्छतु संहत्रो निशुम्भो वा महाशुरः मां जित्या किं चिरेणात्रो पाणिं गृहातु मे लघु दूतो उवाच अबोलिप्ता होषि मय्वं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतो त्रैलोक्ये क्व पुमांस्त्रिदग्रे निशुम्भ निशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैजुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः त्रितमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तु सूर्यशं न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रजाशशि सम्मुखं स्वात्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भो निशुम्भयो केशकर्षणो निधृत गौरवामागमिष्यसि देवुवाच एवमेतदो बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे जदनालोचिता पुरा स्वत्वं गच्छो मयोक्तं ते जदे त्वत्सर्वमादृतो तदा चक्षासुरेन्द्राय स्वच युक्तं कर्तु यत् इति श्रीमार्कण्डेयो पुराणे षष्ठ अध्याय धूम्रलोचन वध। ऋषिरुवाच इत्याकर्णो वच देव्या सदूतमर्षपूरितो समाचष्टो समागम्यो दैत्यराजायो विस्तरात् तस्यो दूतस्यो तदेवाकम्मो कर्णो सुराराट ततो सक्रोध प्राहो दैत्यनामधीपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं ससैन्यो परिवारितः तमानयो बलो दुष्ट्यं केशाकर्षणो विहल्यां तत्परित्राणदो कश्चित् योदिवतिष्ठो परो सहन्तो बहमरो वापि जक्षो गन्धर्वो एव वा। ऋषिरुवाच तेनाग्रप्रस्तुतो शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतो ज्येष्ठ्या सहस्रानमसुरानं द्रुतं जजौ सदृष्ट्या तं ततो देवीं तुहिना चलो संस्थितां जगादोच्चै प्रजाहीति मूलं शुम्भो निशुम्भयो न चेत् पृथाद्य भवति मुद्धार्तमुपैष्यति ततो बलान्यामेष केशाकर्षणो विहल्यां देवुवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतो बलान्योऽसि मामेवं ततो किं ते करोम्यहं। ऋषिरुवाच इत्युक्तो सोऽवधावत् तामशूरधूम्रलोचनः
हुंकारेणैव त्वं भस्मसाचकराम्बिका ततो अथो क्रुध्यं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकां बवर्षो सयकैस्तिस्तथा शक्ति परश्वधै ततो धूतशट कोपतकृत्यानादंशु भैरवं पपात शूरसेनायं सिंहो देव्या सवाहन कांश्चित्कर प्रहारेण दैत्यनाशेन चापरान आक्रांत चादरेण्यंजगान सुमहासुरान केषाञ्चित् पटयामास नखै कष्टानि केसरी तथा तलो प्रहारेण शिरांशीकृत बाण पृथक विच्छिन्नो बाहुशिरसो हितास्तेनो तथा परे पपौ च रुधिरं कष्टदन्येषां धूत केशरो खनेन तद्बलं शरवं हयङ्नितं मात्तना तेन केसरीना देव्या बाहोनिराति कोपिना श्रुत्या तमशूरं देव्या ह्यतं धूम्रलोचनं बलञ्च कैतं कितस्नं देवी केसरीना ततो चूकोपोदैत्याधिपति शुम्भस्फुरिताधरो अज्ञापयामासो च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्डो हे मुण्डो बलै बहुलै परिवारितौ तत्रो गच्छतो गत्या च सा समानियतं लघु केशस्याकृशो वद्या वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुद्धै सर्वै शूरै विनियतां तस्संहतायं दुष्टायं सिंहे च विनिपातिते शीघ्रो मागमत्यां वध्यागृत्या तामोथाम्बिकां मार्केण्डो पुराणे स्वावर्णिके मनन्तरे देवी महत्ते शुम्भनि शुम्भसेनानि धूम्रलोचनमदो रामसष्टोऽध्याय। सप्तमोऽध्याय चण्डमुण्ड वध ऋषिरुवाच अग्गोपास्ते ततो दैत्यश्चण्डो मुण्डो पुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता जजूरबुद्धायुधा ददृशुस्ते ततो देवी मिषद्याशां व्यवस्थितं सिंहो सपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महती कञ्चने ते दृष्ट्वा त्वां समादातु मुञ्चो क्रोध्याता आकृष्टो चपासि दरास्त्यानो तत्समीपगा ततो कोपं चकारो रोचैरम्बिका तानो ऋन् प्रति कोपेन च श्यावदनं मसीवर्णमभूत्तदा भ्रूकुटिकुटिलात्तशा ललाटफलकादद्रुतं कालीकरालोबदना विनिष्कान्तोऽसिपासिनी विचित्रखट्याङ्गधारा नौरमाला विभूषणा दीपिश्चरमोपरिधाना शुष्कमांसाति भैरव अति विस्तारवदना ज्वलनो भीषणा निमग्ना रक्तनयना नदापूरितो दिम्मुखा सा वेगेना विपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारि नाम भक्षयत् तद्बलं पार्श्वग्रहङ्कुशग्राहि जोदघण्ट्या समन्वितान् समादयकै हस्तेन मुखे चिक्षेप वरनान् तथैव जोधं तुरोग्गै रथं सारथिना सह निक्षिप्यो वक्त्रे दशनैश्चव्ययोतति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवयामथो चापरं पदेनाक्रम्य चैवान्य मूढसेन मफतयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा शूरै मुखेन जग्राह रुषा दशनैमथिन्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां महात्यनं ममोर्धाभक्षयो चन्यानांश्चान्तरायत् तदा शीननियता केचित् खट्टाङ्गतारिता जग्नुविनाशामशूरा दन्त्रगाभिहतास्तथा खनेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्टा चन्द्रोभिदुद्राव त्वं कालीमोतिभीषणं सरोवरसै महाभीमीमाक्षिं त्वं महासुरो छादयामास चक्रैश्च मुण्डोक्षिप्तैः सहस्रशो तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तम्युखं बभूर्जथर्कबिम्ब्यानि शुभहनि गणोदरं ततो जहासाति रुषा
भीमं भैरव नादिनी काली करालो वक्तार्तो दुर्दशो सनज्जला उत्थयो च महासिंहं देवी चंडो मधावत् गृहीत्या च शोकेशेषु शिरोस्नासि सच्चिनात् अथो मुण्डोपधावत् तं दृष्टा चण्डं निपातितं तमोपोपातयदो भूमौ सा खड्गविहतं रुषा हतो शेषं ततो सैन्यं दृष्टा चण्डं निपातितं मुण्डं चोषु महावीर्यं दिशो वेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीता मुण्डमेव च प्राहो प्रचण्डेट्टहासो मिश्रमभेत्त चण्डिकं मया तवात्रोपरीतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धो यज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं चोहनिष्यसि ऋषिरुवाच तवानीतौ ततो दृष्टचण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः यस्मान् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्या तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्यात्या देवी भविष्यसि। अष्टमोध्याय रक्तबीजवध ऋषिरुवाच चण्डे च नियते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु कयिते सुरेश्वर ततो कोपपराधीनो चेता शुम्भो प्रतापवानो उद्योगं सर्वसैन्यान्यां दैत्यनामादिदेशः अद्यो सर्वो बलैर्दैत्या शरीशितिरुदायुधा कम्बुनां चतुरशीति निर्जान्तो सबैलयुडिता कोटिबीर्याणि पञ्चाशत् सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तो ममाज्ञया कालोकादौरीतमौर्या कालोक्यास्तशूरा युद्धायो सज्जा निर्जान्तु आज्ञया तडिता मम इत्यागपुष्रोपोति शुम्भनि भैरवो शासनो निर्जोगाम महासैन्य सहस्रैव विवृतो अयोतं चण्डिका दृष्टा तत्सैन्यमति भीषणं जस्वन्नै पुरयामासो धरणी गगनान्तरं ततो सिंहो महानादमतीव कीतवानो नृप घण्ट्यास्वनेनो ताननाम्बिका चोपविङ्ग्रियात् धनुर्या सिंह घण्ट्यानां शब्दापूरितो दिम्मुखा निनादैर्भीषण्यै कालीजिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरयै परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरोद्दिशां भवायामरो सिंहानामतिवीर्यो बलान्विता ब्रह्मेश गोविष्णूनां अथेन्द्रस्य च शत्रयो शरीरे वो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिका जयु यस्य देवस्य जद्रूपं यथा भूषणो वहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिसुरानो जद्दमाययौ हंसयुक्तो विमानग्रे शङ्खसूत्रो कमण्डलु आयता ब्रह्मणा शक्ति ब्रह्माणि सा विधीयते महेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी मोहि बलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्ति हस्त्या च मयूर वाहना जोद्धमो भायजौ दैत्यनाम्बिका गुरूपिणी तथैव वैष्णवीर शक्ति गरुड़परि संस्थिता शंखचक्रो गदा सर्गो खड्ग हस्ताबुभजौ जग्गबारहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति सपाजौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनु नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र शटाक्षेपो क्षिप्त नक्षत्र संहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराज परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शत्रो तथैव सा ततो परिवृतस्तावरिषा नो देवशक्तिवि हनन्त नाम शूरा
शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरत्तु विनिष्क्रान्ताति भीषणा चण्डिका शक्तिरतुग्रा शिवा शतो निनादिनी सा चाहो धूम्र जटिल मिशानाम पराजिता दूतत्यङ्गच्छो भगवान् पार्श्वं शुम्भनिशुं भयो ब्रूहि शुभ्रं निशुम्भञ्च धनवावति गर्वितो ये चान्ये धनवास्तत्र युद्धायो समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तः हविर्भुजो यूयं प्रयातो पतलं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादथो चेद भवन्त्यो युद्धकाङ्क्षिनो तदा गच्छतो तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वा यतो निर्युक्तो दैत्येन तया देवा शिवो स्वयं शिवदूतिति लोके अस्मिस्त्वतो साक्षाति भागता तेहोऽपि स्तुत्यावचो देव्या सर्व्याख्यातं महाशुरा अमरसा पुरिता जगनुर्यतो कात्यायनी स्थिता ततो प्रथमेमाग्रे सरशक्तस्त्रिवृष्टिर्वि बभूर्षोरुद्धतमस्त्यां देवी ममारारयो सा च तान् प्रहितान् वनञ्छूलचक्रपरश्यद्धान चिच्छेदलीलया धातु धनुर्मुक्तै महर्षिभिः तस्यागतस्तथा काली शूलपातो विदारितान् खट्टाङ्गोपहितांश्चारिन् कुर्वती वच्चरत्तदा कमण्डूलजलाक्षेपो हतो वीर्यानो हतौ यश ब्रह्माणि चक्रचक्रेण येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमारी तथा सक्ताति कोपना ऐन्द्रीकुलिसपातेन शतशो दैत्यदानवा पेतु विदारिता प्रीत्यां रुधिरौगप्रवर्षिणः तुण्डो प्रहारैर्विधस्त्या दंष्ट्राग्रक्षतो वक्षसो वराहो मूर्त्या नापतंश्चक्रेण च विदारिता नखै विदारितांश्चन्यान भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचारज्जो नदा पूर्णो दिगम्बरा चण्ड्याट्टो हासैरशुरा शिवदूता विदूषिता पेतु पृथिव्यां पतितांश्च खदातो सा तदा इति मातृगणं क्रुध्यं मर्दयन्त्यं महासुरान् दृष्टा भूपायै विविधै सुदेवारी सैनिका पलायनपरानो दृष्ट्या दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धमो भजजौ क्रुध्य रक्तबीजं महासुरो रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ अतस्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिनास्तो सत्प्रमाणस्तदासुर जुजुदेश गदा प्राणिरिन्द्र शक्त्या महेश्वर ततश्चैन्द्री सवज्रेण रक्तबीजमतारयात् कुलिसेन हतशासु तस्य शुश्राव शोणितं समुत्तो सुततो जोधास्त्रुदुपास्त्र पराक्रमा यावन्तो पतितास्तत्र शरीराद्रदक्तबिन्दवो तावन्तो पुरुषा जातस्तद्वीर्यो बलविक्रमा ते चापि जुजुदुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृभिरुग्रो शस्त्रपातति भीषणं पुनश्च वज्रपातेन हतमस्य शिरो यदा बबाह रक्तं पुरुषस्तातो जाता सहस्रशो वैष्णवी समरे चैन्यं चक्रेणाभिजगानः गदया तरयामासो ऐन्द्रितमोऽसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणै महासुरै शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथा शिला माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एव नाथ पृथक् मातृकोपसमाविष्ट रक्तबीजो महासुर तस्य हतस्य बहुधा शक्ति सुदादिभिर्भुवि पपात जो वै रक्तो गस्तेना सच्चतोषो शूरा तैश्च शूरसकृदुतै शूरै सकलं यगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयो माजुगुप्तममो
तानो विषन्यानो सुरानो दृष्टा चंडिका प्रहोसत्तरा उवाच कालिंग चामुंडे विस्तरं वदनं कुरु मच्छस्रोपात सम्भूतानो रक्तबिन्दूनो महाशुरानो रक्तबिन्दु प्रतिच्छोत्तं भक्तेनानेनो वेगिता भक्षयन्ति चरो रणे तदुत्पन्या महासुरानो एवमेष खयं दैत्य क्षीण रक्तो गमिष्यति भक्षमानस्तया चग्रा न च पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्या तं ततो देवी शूलेन विजगनोत्तम मुखेन काली जगृहे रक्तबीजशोषणितं ततो हो सब जगन्नाथ गदया तत्चण्डिकं न चस्या वेदनं चक्रे गदापात हल्पीकामपि तस्याहतश्च देहात्तु बहुशुस्राव शोणितं जतस्तद्वस्त्रेण चामुण्डा संप्रतिच्छति मुखे समुद्गता जहस्या रक्तपातन्नो शूरा तंश्च खदातो चामुण्डा पपौ तस्यो च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशिविश्रिवि जगान रक्तबीजं त्वं चामुण्डा पीतशोणितं स्वपपातो महिपृष्ठे शस्त्रसंहो समाहतो निरक्तस्य महिपालो रक्तबीजो महाशूरो ततस्ते हर्षमतुलो बापुश्री दशा नृप तेषां मातृगणो यातो ननर्ता संघो दद्दतो इति मार्कण्डेयो पुराणे सावर्णिके मनन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीज वदनामो अष्टमोऽध्याय। नवमोऽध्याय निशुम्भ वद राजोवाच विचित्रोमिदमाख्यातं भगवान् भवता मम देव्याश्चरितो मात्यनं रक्तबीजवदाश्रितं भूयश्चेम्यहं श्रोतुं रक्तबीज निपतिते चकार शुम्भो यत्कर्मो निशुम्भश्चाति कोपनः ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भो शूर निशुम्भश्च अते सन्नेषु चाहवे हन्नमानं महासैन्यं विलक्को मोर्षमुद्वहन अवधावन् निशुम्भहत् मुखया शूरसेनया तस्यागतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयो महासुराः संदृष्टो पुटाः कृद्याहन्तं देवीमुपाययु आजगामो महावीर्य शुम्भोऽपि सबलयुडित निहन्तं चण्डिकां कोपात् कृत्या युद्धन्तमार्तृभिः ततो युद्धमोति वासीत् देव्या शुम्भ निशुम्भयो सरोवर्षो मतिभ्रोगं मेघरीव वर्षतो चिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताव्यां चण्डिका ससरत्करै तारयामास चङ्गेषु शस्त्रौ भैरो सुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादयो सुप्रभं ततारयो मूर्धि सिंहं देव्या वाहनमुत्तममो तारिते वाहने देवी खरोपेनाशीमुत्तममो निशुम्भशासु चिच्छेद चर्मो चापस्त्रो चन्दकं छिन्ने चरवाणी खरेगो च शक्तिं चिक्षेप सह शूरः ताम पश्चादिदा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपन्रीत निशुम्भहत् शूलं जग्राह दानवो अयन्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चापर्चुन्नयत् अभिध्यात गदं सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति शापि देव्या त्रिशूलेन विन्यामस्मतागता ततो परहस्त्यां तमायन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहतो देवी बाणौ घैरपातयत भूतले तस्मिन्निपातिते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे भातर्जतीवो संक्रुध्यो प्रजज्जौ हन्तमम्बिकां सरथो हस्ताता तु चैगीतो परमायुधै भुजैराष्ट्रिभिरतुल्यै व्यापोशशं भवौ नवः तमायन्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जा शब्दं चापि धनुजश्चकरातीव दुःसहं पूरयामास ककुहो निजघण्टास्फनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां
तेजो बोधो विदायिना ततो सिंहो महानादैस्ताजिते महामद्दै पूरयामास गगनंगं ततोपदिश दश ततो काली समुतपत्तो गगनं खमतरायत कराव्यं तन्निनादेनो प्रकसनास्तिरोहिता अट्याट्टहासम शिवं शिवदूती चकारः त्वयि शब्दै सुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं जजौ दुरातं तिष्ठौ तिष्ठेति व्याजहारम्बिका यदा तदा जयति भीतं देवैरागसंस्थितै शुम्भेन गतो या शक्तिर्मुक्ता जलाति भीषणा अयन्ति वह्निकूटा वा सा निरस्ता महल्कया सिंहो नादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकोत्तरान्तरं निर्घातो निश्शनो घोरो जितवानो वनीपते शुम्भो मुक्ताञ्छरानो देवी शुम्भो स्तत्प्रहीताञ्छरानो चिच्छेद ससर्वैरुग्रै हतोषो हतो सहस्रशो ततो सा चण्डिका क्रुध्या शूलेन विजगनोत्तमो सा तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामत्तु कार्मुको आजोगानो सरयि देवी कालिं केसरीनं तथा पुनश्च कृत्या बहो नाम जूतं धनुजेश्वर चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकं ततो भगवती क्रुध्या दुर्गा दुर्गति नाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि ससर्वै सायकांश्च तानो ततो निशुम्भवेगेन गदयामादायो चण्डिकम् अबद्धावतो वैहन्त्यं दैत्यसेना समावृतो तस्यापततो एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खरेगनोसितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायन्तं निशुम्भमराध्यनं हृदि बिभ्यादो शूलेन वेगाभिद्येन चण्डिका विन्यस्यो तस्यो शूलेन हृदयान्निशितः परो महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदनः तस्यो निष्काममतो देवी प्रहस्यो सनवत्ततो शिरश्चिच्छेदो खरेगन ततो हो सावपद्भुवि ततो सिंहश्चाकद्रंष्टाखुन्नो शिरधरानो असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परानो कौमारी शक्ति निर्भिन्या केचिन्य शुम्भोऽसुरा ब्रह्माणि मन्त्रपुतेन त्वयेनन्ये निराकृता महेश्वरी त्रिशूलेन विन्यापेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिचूर्णीकृता भुवि खण्डखण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादनवाः कृता वज्रेण चण्डीहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद् विनेशुरसूरा केचिन्नश्चामहवत् वक्रिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपै दशमोऽध्याय शुम्भवध ऋषिरुवाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्या भ्रातरं प्राणसन्नितं हनुमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धो ब्रवीद्वच बलाबले पदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भामवः अन्यासं बलमाश्रित्य युद्धसे जातिमालिनी देवुवाच एकैवाहं जगत्तत्र द्वितीया मम परा पश्यैता दुष्टमज्जेव विसन्तो मदविभूतयो ततो समस्त्यास्ता देव्यो ब्रह्मणि प्रमुखालयं तस्या देवस्तनौ जगनुरेकैवासीत् तदाम्बिका देवुवाच अहं विभूत्या बहुवीर्योरुपैर्यदा स्थिता त्वत्संहृतं मयैकैव तिष्ठमाजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततो प्रववृत्य युध्यं देव्या शुम्भस्य चोभयो पश्योतं सर्वदेवनामसुरारञ्चोदारुणं सरोवरसैः शीतैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुण्यै
तयोजुद्धमबूद भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानस्त्राणि शतश मुमुचे जन्नथाम्बिका भवञ्च तानि दैत्येन श्रत्पति घातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्च लीलयैवग्र हुङ्काराचरणादिभिः ततो सरस्वती देवी मच्छदयत्सह शूरः शापि त्वत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदोच्चेषुभिः छिन्ने धनुषी दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमदाददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामपश्योकरस्थितं ततो खड्गमुपादाय सतो चन्द्रं च भानुमत् अबोधावत् तदा देवीं दैत्यनामधीपेश्वर तस्यापततो एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तै शीतै बाणै चर्मोचार्कलयलम् तस्य च तदा दैत्यश्छिन्नधना विसारथि जग्राहमुद्गरं घोरं विकानिधनुद्धत चिच्छेदापस्ततस्तस्य मुद्गरं निशित्वैश्वरै तथापि सोऽबोधावत्यां मुष्टिमुदमोवेगो बाणो समुष्टिं पतयामास हृदये दैत्यपुङ्गवो देवास्तु सञ्चापि सा देवी तले नरश्यतरयत् तलो प्रहाराविहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजसहसा पुनरेव ततोत्थितो उत्पत्तो च पगृहो चै देवी गगनमास्थितो तत्रापि सा निराधारा जुजुधे तेन चण्डिका निर्युद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धमुनि विस्मयाकारकं ततो निर्युद्धं सुचिरं कृत्या तेनाम्बिका सह उत्पत्तो भ्रमयामास चिक्षेपो धरणीतले सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुदमवेगित अबधावतो दुष्टात्या चण्डिका निधनेच्छया तमायन्तं ततो देवी सर्वदैत्यो जनेश्वरं जगतं पतयामास विद्याशूलेन वक्षसि स गताश पपातोभ्यां देवी सुलग्रविक्षतो चालयन् सकलां पृथ्वीं शाब्दिदीपं सपर्वतां ततो प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्तनि जगत् शास्तमतिवाप निर्वलं च वन्यवो उत्पातो मेघाशोल्का ये प्रगासंस्ते समं जजु सरितो मार्गो बहिर्नष्ट संस्तत्रोपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरो मानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगु वादंस्तथैवन्ये ननृतुश्चापरोगणाः बभूपुन्ना सदा वाता सुप्रोहो भूदिवाकरो जजुल्लोश्चाग्नयो शान्ता शान्तो दीर्घो जनितो सना उत्तर चरित्र एकादश अध्याय नारायणी स्तुति ऋषिरुवाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरगमास्तामो कात्यायनीं तुष्टुवुरिसलातो विकासी वक्त्रात् विकासी तासा देवी प्रपन्यार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातो जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्व आधारभूता जगदस्मेका महीस्वरूपेण यतो स्थितासि अपां स्वरूपोऽस्ति तया तयोतत् दप्पय्यते किसस्मलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्यो बीजं परमासि माया सम्मोहीचं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्या भुवि मुक्तिर्हेतु विद्या समस्त्याद देवी भेदा स्त्रिय समस्त्या सकला जगत्सु तयैकया परिमतयैतत् का ते स्तुति स्तब्धो परापो रक्ति
सर्वभूता यदा देवी सर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तो परमक्तयो सर्वस्व बुद्धिरूपेण जनस्व हृदि संस्थिते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्टादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वसो परतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल्यो मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्तो विमानस्ते ब्रह्मणी रूपधारिणी कौशाम्बो खड़िके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलो चंद्राहि धरे महावृषभो वाहिनी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुटो वृते महाशक्ति धरे नगे कौमारी रूप संस्त्याने नारायणी नमस्तुते शंखो चक्र गदा सर्गो गीतो परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गीतो मग्र महाचक्रे दंष्ट्र धूत वसुंधरे वराहो रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहो रूपेण ग्रेण हन्त्यं दैत्यान कृतज्ञमे त्रैलोक्योत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रो नयनोज्जले वित्रप्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतो दैत्यो महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंष्ट्रा करलो वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडो मथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे द्रवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती बड़े भूति ब्राह्मी तामसी नियते तंग प्रसिद्धे से नारायणी नमस्तुते सर्वस्व रूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भये भस्त्राहीन देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयं भूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यो कात्यायनी नमस्तुते जलाकराल मृत्युग्रमशशारुसूदनं त्रिशूलं पातु न भीते भद्रकाली नमस्तुते हीनस्ति दैत्य तेजांसि सनेना पूज्यो या यगत सा घंटा पातु नो देवी पापे भोन्न हो सुता नीवो असुरा श्रीगो बसांग पंक चर्चितस्ते करज्जलो शुभाय खरेगा भवतु चंडिके तंगनता वयम रोगानो शेषानो पंगुष्टि तुष्टो रुष्टातु कमानो सकलानो भिष्टानो तमाश्रितानंग विपन्यारणं तमाश्रिता हस्रियतं प्रयन्ति एतत् कृतं यद् कदनं तयाद्दो धर्मोद्दीशं देवी महासुरानं रूपैरोनेकैव हुदात्तमूर्तिं कीतम्बिके तत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वादेषु वाक्येषु च का तदन्या ममोर्तगते मोहति मन्धकारे विभ्रमयोतेतीव विश्वम् रखांसि जत्रो गोभिशाश्च नागा जत्रारयो दस्युबलानि यत्रो नवानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्रो स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया जे त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नहरीरीते नित्यं यथा सूरवबाधुदनैवो सद्यो पापानि सर्वजगताञ्च समन्नयासु उत्पातपाको जनितंश्च मोपसर्गानो प्रणोतानं प्रसीदं त्वं देवी
विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिड्डे लोकानां वरदा भव देवुवाच वरोदाहं सुरोगणा वरं यं मनसेच्छत त्वं वृणुद्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचु सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यशखिलेश्वरि एवमेव तया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देवुवाच वैवसते हन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवुन्यावुत्पश्यते महाशूरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भो सम्भवा ततस्तौस्नाशयिष्यामि विन्ध्याचलो निवासिनी पुनरोपतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्तश्च तनुग्रान् वैप्रचित्यान् महासुरान् रक्त्यादन्त्या भविष्यन्ति दारिमी कुसुमोपमा ततो मं देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तवन्त्यो बहुरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकं भूयश्च शतवार्षिकमानावृष्टामनसंवसि मुनिभिः भूमौ संविशामज्योनिजा ततो सतनो नेत्राणं निरीक्षिष्यामि जन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुया सताक्षिमीति मन्यतो ततो होमखिलं लोकमात्तदेहसमुद्भवै वरिष्यामि शूरा साकैरावृष्टे प्रणधारकै शाकम्भोरीति विख्यातिं तदा यस्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाखं महाशूरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्या हिमाचले रक्षांसि खयिष्यामि मुनीनां तन्करणात् तदा मं मुनयो सर्वे स्वसत्मूर्तयो भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाक्षस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरूपं कृत्या संख्यो षट्पदं त्रैलोक्यहितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकस्तदास्तुष्यन्ति सर्वतः इत्यं यदा यदा बाधा दानवोऽथा भविष्यति तदा तदावतीर्ष्याहं करिष्यामि संख्यम् उत्तर चरित्र द्वादश अध्याय भगवती वाक्य देवुवाच एभिस्तवैश्यो मां नित्यं स्तुष्यते यः समाहितो तस्याहं सकलं बाधां नाशयिष्याम्य संशयं मधुकैटोवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वदो वदं शुम्भनिशुम्भयो अष्टमाञ्च चतुर्दश्यां नवमाञ्चैकचेतसो शस्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चिदो दुष्कृतः न चापदो भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टव्यजनं सकृतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतो न शस्त्रानलोतयोघत् कदाचित् संभविष्यति तस्मान्नमितमहत्यं पठितव्यं समाहित्वै श्रोतवञ्चो सदा भक्त्या पौरं स्वयं हि त्वत् उपोसर्गानुशंस्तु महामारी समुद्भवानो तथा त्रिविधोमुत्पातं महत्यं समयन्यं यत्रैतत्पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमक्ष्यामि सन्निध्वं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूज्यामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतचरितमुचार्यं श्रव्यमेव च जनता जनता वापि बोलिपूजं तथा कृतं प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते जा च वार्षिकी तस्यां ममैतन्यहन्तं
श्रुत्या भक्ति समन्वितो सर्वो बाधा विनिर्मुक्तो धनो धन्नो सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयो श्रुत्या ममैतन्यहन्त्यं तथा च तपोत्तयो शुभा पराक्रमञ्च युद्धेषु जायते निर्भयो पुमान् रीपवो शङ्कयं यान्ति कल्याण च पद्यते नन्दते च कूलं पुंसां मातनं ममोऽसि नित्यां शान्तिकर्माणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहोऽपीडासु च ग्रासु मात्यं श्रीयान्यम् उपोसर्गा समं यान्ति ग्रहोऽपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निविदृष्टं सुस्वप्नमुपाजायते बालग्रहो विभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेते च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमो दुर्वृत्यानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममैतन्यहन्त्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपिस्तथमयि विप्राणं भोजनै होमै प्रखनीयर्निशम् अनैश्च विविधै भोगै पदान्नै वत्सरणेया पृथिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा रोगं प्रयच्छति रक्षं करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यो निर्वाणं तस्मिन् स्तुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते जुष्माभिस्तुतयो जाश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च करितास्तो प्रयच्छन्ति शुभाङ्मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितो दस्युर्विवावृतो शून्ये गृहीतो वापि शक्रुभिः सिंहो व्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन व्याज्ञप्तो बध्यो बन्धो गते होपि वा आगुर्नितो वातेन स्थितो पोते महार्णवे पतत्सु वापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुण्ये सर्वबाधासु घोरासु वेदनावधितोऽपि वा स्मरणो ममैतच्चरितं नरमुच्यत् सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दशवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतोश्चरितं मम ऋषिरुवाच ईतुक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतमेव देवानां तत्र वारन्तरो धीयतो तेऽपि देवा निरन्त्यका साधिकारानो यथा पुरा यज्ञभागभुजो सर्वे चक्रविनातरयो दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ जुदि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रहो तुलाविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषापतलमजयु एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः शुम्भयो कुरुते भूप जगतो परिपालनम् तयैतन्नहते विश्वं स्वैव विश्वं प्रसूयते सहो जाचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरो महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवतज्या स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवो काले निरंशैव लक्ष्मी वृद्धि पदाग्र्ये सैव भावे तथा लक्ष्मी विनाशापजायते स्तुता संपूजिता पुष्पै धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्वां पुत्रांश्च मोतिं धर्मे गोतिं शुभामो इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके वनान्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भवध समाप्तो द्वादशोऽध्यायः। उत्तर चरित्र त्रयोदश अध्याय देवीर वर प्रदान। ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपो देवी महात्म्यमुत्तममो
एवस्प्रभावा सा देवी जयदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णु मायया तया तमेषो वैश्यश्च तथैवन्ये विवेकिनः मोहन्ते मोहिताश्चैव मोहमे स्वन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगो सर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा शूरतोष नराधिपः प्रणिपतो महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विन्नो होति महमत्येन रज्ज्वापहरेण च जगाम सद्योस्तपसे स्वाच वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बया नदीपूलिनो संस्थितो स्वाच वैश्योस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपं तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कित्या मूर्तिं महिमहिमो अहर्नाचक्रोत्तस्या पुष्पधपाग्नितपन्यै नीराहारौ जताहारौ तस्मनस्कौ समाहितौ ददत्तुस्तौ बलञ्चैव निजगात्रा सुखिक्षितम् एवं समाराधयोस्त्रयि वर्षितत्यनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत् पार्थते त्वया भूपो तया च कूलनन्दने मतस्तत् प्राप्तो तं सर्वं परितुष्टा ददामि त्वत् मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यमभिस्रवंस्रो जनवानि अत्र चैव निजं राज्यं हतो शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानस ममेत्तोमिति प्राज्ञ संगो विच्युतिकारकं देवुवाच स्वल्पैरोह विनृपते स्वराज्यं प्राप्स्यते भवानो हत्यारिपूर्णकाङ्क्षितं तवो तत्रो भविष्यति मृतस्य व्यः सम्प्राप्य जन्मदेवादो विवस्वतो सावर्णिको नाम मनुर्भवानो भुवि भविष्यति वैश्यवर्षो तया जश्च वरस्मत्तविवाञ्छितो तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्तातयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तरीता सद्यो भक्त्या तवामविश्रुता एवं देव्या वरं लब्ध्या शूरथो क्षत्रियोर्सर्वः सूर्या जन्मो समासद्यो सावर्णी भविता मनुः सावर्णी भविता मनुः क्लीं ओं इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनन्ते देवी माद्यं शूरथो वैश्यवरो प्रदानं रामोक्षयोदसिद्धाय श्रीसप्तोषोऽति देवी महत्यं समाप्तम् ॐ तत्सत्यो शांति शांति